हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। इनसाइट टुनाइट में अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में फिर एक बार हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की, और न्यूयॉर्क में जो उनके एंगेजमेंट्स रहे वहाँ उनका अलग अलग रूप, अलग अलग चेहरा, अलग अलग वस्त्रों में सजे धजे नरेंद्र मोदी जी अपनी जिस सभा को संबोधित कर रहे थे उनको बहुत सराहा गया। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन कम्युनिटी की तरफ से रहा मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जिसका लाइव टेलीकास्ट 80 देशों में किया गया। वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध होकर अपने भारत से आए हुए इस नेता की बात सुनने के साथ साथ कहीं प्रेरित हुए, कहीं आनंदित हुए, और कहीं कुछ लोगों को किसी रूप में निराशा भी हुई होगी। और निराशा की गलियों की तरफ जिस तरह के विचार रहे हैं वो भी हमारे कार्यक्रम में आज आप तक पहुंचने वाले हैं। और वो विचार भी जो बहुत उत्साहित रहे हैं और जिन्हें लगा कि उनका सपना साकार हो गया। एक तो सपना ये भी कि 2005 में उसी स्थान पर एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पूरी तैयारी के बावजूद भारत से नरेंद्र मोदी जी पहुंच नहीं पाए थे, वीजा उनको नहीं मिला था। बहरहाल वो सारी बातें पीछे छोड़ते हुए आगे जब बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा पर फिर एक बार चर्चा करने के लिए आपके साथ, और कल आप में से कुछ लोग कुछ बातें हम तक पहुंचाना चाहते थे आज के कार्यक्रम में, फिर आपका स्वागत रहेगा इस यात्रा में। जो कुछ उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भारत के लिए अर्जित हुई हैं उनके बारे में टिप्पणी करने के लिए, या कहीं कुछ ऐसा था जो आप चाहते थे और वो नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में नहीं हो पाया, पर आपके साथ में फिर एक बार ये याद करूं कि हमें निश्चित रूप से कायल होना पड़ता है उनकी क्षमता का, उनके अनुशासन का, और अपने आप पर नियंत्रण कर पाने की उनकी क्षमता का। ये 9 दिन नवरात्रे के, और सुबह से शाम तक जो शख्स कुछ खा पी नहीं पी रहे थे, सिर्फ चाय, लेमनेड, पानी, खा कुछ नहीं रहे थे। और क्योंकि ये बात हम सब जानते थे तो हर दिन के बाद ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे कहीं वो पहले से कुछ दुबले तो नहीं होते जा रहे हैं। बहरहाल इस सब बात का कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है, न तो उनकी परफॉर्मेंस अगर उसे कहा जाए संबोधित करने की, उस पर कोई प्रभाव हुआ। और जब व्हाइट हाउस में वो डिनर के लिए गए तो उन्होंने उपस्थित सज्जनों से कहा कि वो निश्चिंत होकर भोजन करें। और कुछ बातें हैं उनके बारे में जो चलते चलते हम करेंगे, पर अभी समय है हमारे उन अतिथियों का स्वागत करने का जो संबोधित होने वाले हैं आज के कार्यक्रम में आपसे, और बात करने वाले हैं मोदी मीन्स बिजनेस के बारे में, उनकी क्या राय रही है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं हमारे उन साथी का जो कांग्रेस के साथ संबंध रखते हैं, INOC के सदस्य, विशेष रूप से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े रहे, राजेंद्र दिचपल्ली। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपका कैमरा इधर और स्क्रीन उधर। और हमारे दूसरे साथी जो है ग्लोबल थिंक टैंक नाम की एक संस्था के साथ संबंधित हैं, और दोनों ही मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो आयोजन हुआ उस कमेटी के साथ कहीं ना कहीं विशेष रूप से सक्रिय रहे थे। और उनका स्वागत करते हुए मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि कहीं ना कहीं हमने देखा जहां जहां नरेंद्र मोदी जी गए उनके वस्त्र बिल्कुल उस स्थान के अनुरूप रहे थे। और ऐसी खबरें आई थी पहले कि उन्होंने इसके लिए कोई बॉलीवुड से फैशन डिजाइनर को भी हायर किया गया था। ऐसा आज के युग में शायद आवश्यक सा हो गया है कि प्रेजेंटेबल हो प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें निरंतर ली जा रही हैं, वीडियो के द्वारा कई लोग देख रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना 80 देशों में इसका प्रसारण हुआ था। लोग देखें कि उनका प्रधानमंत्री अपने वस्त्रों की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, तो बाकी क्लीनलीनेस की बातें वो कैसे पूरी करेगा, शायद वो भी कहीं रहा होगा। बहरहाल तो इस बात को लेते हुए चेहरा अगर सुंदर रखने की बात आती है तो प्लास्टिक सर्जन के रूप में जाने जाने वाले ENT से संबंधित डॉक्टर राज भयानी का हम स्वागत करते हैं। राज जी, स्वागत है आपका। और ग्लोबल थिंक टैंक के दुरांतो सिंह का भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां से हमने ये खबर पाई कि न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और सेंट्रल पार्क में और कई संबोधनों के अलावा महत्वपूर्ण मीटिंग्स
मैं सीईओज के साथ मिलने के बाद, न्यूयॉर्क के मेयर के साथ मुलाकात करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन चले गए। तो मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले आप देखेंगे कितनी गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए वॉशिंगटन में भी लोग मौजूद थे। सो लेट्स टेक अ वेरी क्विक लुक एट ग्लिम्पसेस ऑफ Prime Minister Narendra Modi arriving at Washington, and then we'll continue. उतरते उतरते अभिवादन उपस्थित सज्जनों का करने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीरें खिंचाकर भी बहुत लोगों को प्रसन्नता हुई है, और वैसा अवसर हमारे राज बयानी जी को भी प्राप्त हुआ था। हम उनकी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, पर अभी देख रहे हैं आप जो स्क्रीन पर, वो आज ही की बात है कि कल की बात है जब वो वॉशिंगटन पहुंचे? कल की बात है, कल पहुंचे हैं वॉशिंगटन, और वहाँ उनका ये स्वागत विधिवत पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ भारतीय समुदाय भी उस स्थान पर इकट्ठा था उनका स्वागत करने के लिए, और एक तरह के उत्साह से भर जाते हैं, उमंगे सी जैसी संभवतः हर नेता के लिए ऐसा रिसेप्शन होता है कि नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये लिखा जाता रहा है कि वो एक रॉक स्टार की तरह उनको रिसीव किया गया है। तो राजेंद्र दिचपल्ली जी इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हम उनसे जानेंगे, पर फिलहाल हम देख रहे हैं दृश्य जिसमें आप देख रहे हैं कुछ उसी तरह के भाव लोगों के चेहरे पर जैसे कि न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर देखे गए थे, और इस तरह की आतुरता, उनको छू लेना चाहें, उनको अपनी ओर से कुछ भेंट करना चाहें, ये अपने आप में एक नई सी बात किसी राजनेता के लिए लगती है, विशेष करके जो ठीक पहले वाले प्रधानमंत्री जी को हमने देखा था जिनके साथ कम्युनिकेशन के बारे में लोगों की तरफ से अलग अलग प्रश्न चिन्ह सी बातें आती रही थी। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स राजेंद्र जी। On the face of it, you were present at Madison Square Garden. What was the take-home essence of the speech of Prime Minister for you? Ashok ji, first of all, the speech at Madison Square Garden and the event was historic because you saw 18,000 people assembled there for this event. So many Indians assembling in one place for leader, Prime Minister of India, was amazing. You know, the Prime Minister addressed the people for almost 1.5 hours, and I thought it was a very interesting speech. He touched upon many topics. Now from here, you know, after having experienced such an amazing reception and the hope and the aspirations of the NRI's US-Indian community here, I hope some tangible benefits are built out of US-India partnership here. Because as we all know, US-India relations have deteriorated slightly after a few incidences earlier this year and last year. So there is a need to build stronger US-India relations. And this reception that the Prime Minister got should be an opportunity for the government in India and the Prime Minister to rebuild stronger relations. Sorry to interrupt. Very briefly, if you say something about personally, how was the feeling for you while you were witnessing that historic event? As an Indian, I felt proud to see 1,800 people cheering for the Prime Minister. And, you know, it was, I saw almost 20 US lawmakers and other Indian elected officials, lawmakers there. So it was a proud moment to see so many people assemble and chant slogans on US-India relations and on India. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai, and right. You know, slogans like that. I felt proud as an Indian. So then, and I hope now the momentum that US-India relations has got from this is built upon. Some tangible benefits are built. Like when Manmohan Singh was the Prime Minister, we saw that US-India nuclear deal was signed. And the Congress government
went against the communists that were supporting the government at that point of time and saw that the bill was passed in parliament. We'll come back. I hope such tangibles are built absolutely, by this new government. We'll come back on that side a little bit more. And I just wanted to mention that yesterday, about 2 hours or so, informally, President Barack Obama and Prime Minister Narendra Modi talked to each other, and they decided to write a joint op-ed that is published in the Wall Street Journal, which is a very rare thing कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर कोई बात कहने के लिए एक ओपेड लिखें. उसमें कुछ बातें जो कही गई उसमें से ये भी कहा गया कि their goal is to find mutually rewarding ways to expand our collaboration in trade, investment in technology that harmonize with India's ambitious development agenda while sustaining the United States as the global engine of growth. तो दोनों ही नेताओं ने चाहा कि दोनों देश मिलकर काम करें और पूरे विश्व को उसका लाभ हो. पर फिलहाल हम फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा भावनात्मक यानी इमोशनल गलियारे की तरफ, क्योंकि मैं जानता हूं दुरांतो बहुत सक्रिय रहे थे उन दिनों में भी जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी जी की वेव चल रही है. ऐसी बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही थी, भारत के बाहर भी था. तो दुरांतो, फॉर यू witnessing Madison Square Garden with Narendra Modi ji's speech, how was the feeling? कैसा आपको लगा? देखिए, मैं ये एक्चुअली एक शब्द में इवन मैं अभी बोलना शुरू करूं शायद रात ख़त्म हो जाएगा, सुबह आएगा, मेरा बोलना बंद नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे को रुकिएगा. बिल्कुल यही हमारा काम. थैंक यू. तो बात ये है, जो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर, कितने सारे नेता हम लोगों ने देखा, लेकिन मैंने एक्चुअली 10 साल तक उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ. दैट्स आई कैन प्राउडली आई कैन से. तो देखिए, एक बार उन्होंने ऐसा बोला था, जो चुनाव में मेरे को वोट दिया वो भी मेरा है, जो चुनाव में नहीं दिया वो भी मेरा है, और जो किसी को वोट नहीं दिया वो भी मेरा है. और एक बात है जो आपका जो क्यों भावनात्मक बात यह है, जो वो सबका साथ सबका विकास और मिनिमम गवर्नमेंट, हाँ मिनिमम जो है और मैक्सिमम गवर्नेंस, हाँ इसका जो नारा है, और एकदम क्या है लास्ट तक गरीब से गरीब सबके पास ये जो पहुंचाना है जो विकास, ये this is a dynamic leader we got, I believe, after 500 years. I mean, and by this time definitely we got Mahatma Gandhi. तो ऐतिहासिक पटल पर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं दुरांतो जी. और राजेंद्र जी किस तरह इस बात पर रिएक्ट करते हैं वो चर्चा हम बाद में करेंगे. आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर राज बयानी फॉर हिज सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग दिस इवेंट अ सक्सेस. तो एक तो जो कुछ हुआ उसकी तैयारी में आप की भूमिका रही थी, फिर जो कुछ बातें उन्होंने कही, वाज दैट रेजोनेटिंग विद योर एक्सपेक्टेशंस? This performance by Narendra Bhai ji, the speech was actually beyond our expectation. Means you cannot even imagine or dream of such a speech. That speech was very inspirational. If there is any leader in India who can give true inspiration, then Narendra Bhai Modi ji is the only person who can inspire the people in this way. I think that speech was amazing. And what inspiration you got from it for yourself? Means I think he mentioned very clearly that the way he talked, that his humble roots, that he was a chai wala, and he believes in working with small छोटे लोगों के साथ काम करने में उनको मज़ा आता है, और छोटी चीज़ों के ऊपर काम करने में मज़ा आता है, और दोनों चीज़ें साथ लेके उनको कुछ बड़े काम करने हैं. So that humbleness which is there, at the same time the humbleness and connecting Aam Janta to his global and bigger vision, that is his will be legacy. That how he connects with the common people and how he will get the biggest problems of India, and I think he can inspire people that way. So there are people who were longing to be near him, and there are few people who got to shake hands with him, and Dr. Raj Bayani was one of them. So if we get that image where we see him shaking hands with
our Prime Minister Narendra Modi will show that to you. But how was that moment? And it was kind of a craze which you normally feel is reserved for film stars, and there is a kind of glamour that has gradually started becoming a part of Narendra Modi's persona. Means this event was a rock star event. There is no other foreign or US leader has such a grand gathering where every 30 seconds people were clapping, roaring, laughing, chanting. So that kind of reception you have never seen with even any other leader. Forget about foreign leader, even US leader. And people were like mesmerized by Narendra Bhai. They were like going crazy in the, as you all saw, in Madison Square Garden. So will that be a memorable moment for you when you were shaking hands with him? Was there any exchange, small pleasantries? Yes, when we met him, so we took few shots and I said few more. So he said in Gujarati, "Hai bahut hai gaya." So that was very, and then actually I wanted to say so many things to him, but when I saw him, I couldn't speak. So I just, we laughed, and then he said to all of us, "Why don't you visit India and then we'll see." And we left it there. So he did invite people to visit India, and there are many ways in which he connected with people. So while he was addressing at that foreign relations related organization, he talked, Rajendra ji, about a nation which is focused on ideology may not go that far as the nation which has its roots in the philosophy. तो ये जो दार्शनिक पक्ष है भारत का, उसको उन्होंने अलग अलग जगह पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टच किया है. How do you see that in the perspective of his approach towards foreign relations? Well, we all know India is a country with great heritage and great past, and the Prime Minister has explicitly conveyed that in his Madison Square Garden speech. But apart from that, if you see, apart from his theatrics and idiotic speech that was there, I would like to see performance and tangibles. In the 100 days that he's been in power, he's repeatedly made a lot of promises during the elections, especially black money. He had said that he'll get back black money in 100 days during the election campaign. I don't see any black money that has been exposed or unearthed. He had talked about inflation. Tomato prices are higher than almost diesel and petrol today. Inflation is still high. He had talked about new governance. There is, of course, a political honeymoon that is there, and there's a new administration. But I don't see the big ideas on how he's going to usher in great economic changes. So what I heard from many of our viewers yesterday was that have patience. Some of those who were in alignment with Modi ji's vision. So let me take a call, and then I'll have Duranto also to respond. Hello, ITV Live. Hi. Hi, how are you? What's your name, sir? My name is Satyabrata Mukherjee. Ji Mukherjee sahab, were you present at Madison Square Garden? Yes, I was present at Madison Square Garden, and I want to talk about something that is mainly on corruption. He didn't, talk about the corruption in India. Every sphere, all field, wherever you go, you will see some kind of corruption goes on, and that India has to improve. India has to remove corruption. I think I got your point, and I'll have. One second. Let Duranto respond to this. And while he's talking all positive and he's not referring to corruption, does it mean that he doesn't know about corruption? Actually, you know what? Definitely, we talk about corruption. Narendra Bhai Modi and that's campaigning in 2014. Corruption ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था. बीजेपी में तो कोई corruption है ही नहीं. ऐसा तो नहीं है. वो क्या बोलेगा? And one more thing, मैं अपना दोस्त को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस का मित्रों को, जो ये 100 days में, if you see प्रधानमंत्री जन धन योजना,
पहले बैंक वाले That is a Congress scheme that has been renamed. Sir, let me speak. Sure. Please. Okay. So, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and after that, ये जो टॉयलेट, हाँ, स्वच्छ भारत, हाँ, एक एक करके ये जो छोटा छोटा योजना जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो लाया, पिछले 10 साल में कांग्रेस का हमने देखा 2AG, CAG, कॉमनवेल्थ, राहुल का जीजाजी, और मैं क्या बताऊं? So I'll have both of them talk more, but let me continue. I'll have one more viewer connect with us, and there was a reference about policy paralysis with the previous government, and he promised that there will be a dynamic government. So many people, including foreign media, is also looking at him as a dynamic leader. But let's see what you have to say. I appreciate your call, sir. Thank you. Hello, ITV Live. Yeah. जी नमस्ते. Namaste. आपका शुभ नाम? Sushma Kotawala. Yeah, Sushma ji, tell me, were you present at Madison Square Garden? Yes, Ashok ji, namaskar. I was there and very much happy and proud to see our Honorable Prime Minister Modi ji. And I was seeing your TV yesterday, your channel, and there was a comment which really pinched and hurt most of the Indians, that, if I'm not mistaken, right, what he says and what he talks means nothing, but we should see the result. So answer to that comments, I would like to express and ask those opposition people, name any other Prime Minister of government that has made positive changes in 3 months, 100 days. But Modi's government has proved this, such as, I can say many things about it. Like myself and other Indians first time feels that their country is safe and moving towards the right path. They got the confidence and strength to fight for the wrong things. And first time 20,000 Indians have gathered together for a politician speech on a foreign land that no other government of India did. And first time every NRI is proud to be an Indian. Another proof is like I came to know 80 countries have listened to our Prime Minister, which has never done before. And I can boldly say that first time our neighboring brothers are scared. Other politicians of the world has realized that there is someone more powerful, famous than them, and there is a country that is going to be super duper power. The whole world is shaken. I would love to give Modi ji a new name, Mahanayak, and new creator of India. Now let me put some statistics that what he has done in 3 months. Gas prices has gone down. Dollar went down to 60 from 68. Well, one of our panelists told that tomato prices are not high, but he didn't see the other vegetable prices have gone down too. So many new projects are on the way. It would like to name them. It's no and, but if you like to say, I can say like in 3 months, government of Hindustan got the permission to start the bullet train. Law and order has been smoothly controlled and people are following. Judiciary has become... Sushma, you are so well prepared, but I think we should let you go for now. Let me respond to that. Definitely stay in touch. Let me respond But to what you have said, our friend Rajendra ji would like to respond. Stay with us for that. Yeah, go ahead quickly. Ashok ji, you're talking about change of governance and ushering in a new era of administration. You have a new council cabinet take oath. 18 of them are tainted, are having criminal background. You know that as a journalist. 18 of the NDA ministers are having corruption and other charges against them. You saw more than 700 rats in the last 100 days, which is unprecedented, you know. Okay, so you're talking about inflation. Inflation is higher than what it was 100 days back. Okay, bullet trains. The Prime Minister says he wants to have his vision of Make in India. But what are we doing? We are calling the Japanese to build our bullet trains. We are calling the Chinese to build our bullet trains from Karnataka to Mysore. UPA government had indigenous development. Even today's Mangalyan is a vision of Dr. Manmohan Singh. You see the submarines, they were built indigenously. You see the satellites, they were built indigenously by UPA government. I want to see that type of vision, a bigger vision that will usher in great economic reform. The very interesting part, let me now take it away. You don't have the only way
of continuing. So we'll have you back, but there are more things that we want to cover. So bringing back to the perspective, the interesting fact that we see differently, and that makes us interesting. That makes life interesting and world interesting. And the way many people perceived what he was saying and what he has done and what he's likely to do and what you are seeing is of course different. So we respect that difference, but continuing with the need to respect time, I have to take a short break. So we'll be right back after this break. Stay with us. वेलकम बैक, यू वाचिंग इनसाइड टुनाइट द शो है सर। हम बात कर रहे हैं मोदी मीन्स बिजनेस, और उन्होंने जो बिजनेस किया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, उस पर थोड़ी थोड़ी बात हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कुछ भावनात्मक पहलुओं की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और आगे की बात हमारे पैनलिस्ट राजेंद्र दिचपल्ली, दुरंतो सिंह, डॉक्टर राज भयानी के साथ बढ़ाने से पहले मैं जुड़ना चाहता हूं आपसे, आप जिन्होंने कॉल किया है हमें। लेट्स हियर फ्रॉम यू। हेलो ITV लाइव। हेलो, या गोपाल जी, राइट? yes. Okay, so tell me, what was your impression about Madison Square Garden speech of Prime Minister Modi? Oh, I was mesmerized by the speech the Prime Minister gave, and I tell you, he is the best Prime Minister that I have seen so far we had. He has already proved to me that he is the best. Please reduce the volume of your television and just respond to some people who feel, that includes my friend Rajendra Dichpalli, that there is all style, there is no substance. Do you think he's backing up what he's saying with actions? Yes, what he has done so far, it has never been done in India. What has he done? In previous government, look at the things they did it. You know, they had so many scams. And I mean, you cannot say in 4 months they will not have any scams. But the way Modi is working, I think it will be very decent and honest administration, and I have a lot of hope on him. And if India has to improve, we have the best Prime Minister so far. So I appreciate your call, Gopal ji, and I'll take one more call and then we'll move on to another areas. Hello, ITV Live. Hello. Hi. Yeah, I am just watching Ashok Vyas live program. जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपका नाम? हाँ जी अशोक जी, मेरा नाम मंजीत सेतिया। जी मंजीत जी। So मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। बिल्कुल। I was there in the Madison Square Garden and we love him. He is a great Prime Minister and very exciting to see him. The only thing I was wondering that we live in America and we are so safe, and we go to India and the people especially living in India, there's no law and order. We are always afraid of every minute what is going to happen there. I appreciate that. The second thing I was wondering, corruption, as somebody else was also talking. Right. I think these are the two most important where the 100% country is being affected. And here he is talking about toilets and Ganga. Yes, they are important things. But I think, according to us, and we were like few people there, and we all were talking about it, that I think law and order and corruption is the number one thing in this country. If that problem is solved, 80 to 90% problems will be solved. I absolutely agree with the caller, Ashok ji. Yeah. Because corruption and law and order was not touched upon, which are very important to the citizens in India. So I appreciate your call, and Rajendra ji, you chipped in, that's also good. But let me say, if he was to say that we'll take care of law and order, then Rajendra ji would have said he's just saying it's not happening. But the facts speak for themselves, Ashok ji. There are more than 700 riots in the last 100 days. Kindly allow others to speak, Rajendra ji. So now let Duranto respond when people have concerns about the law and order problem and what Modi government is doing about it. Do you see any sign that it is improving? Last 4 months in Delhi, actually, 15 days before मैं दिल्ली घूम के आया, रात 3 बजे भी मैं घूम के आया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और क्या है, आजकल मैं बहुत सारे ऑटो वाले के साथ बात किया,
एक भी ये 4 महीने में दिल्ली में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और जहां कुछ हुआ पुलिस ने उसी वक्त रेस्पॉन्ड किया। एंड मैं अपना कांग्रेस का दोस्त को एक ही बात में बोलना चाहता हूं, सडनली ही इज टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट ही डिड। ओके, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र भाई ऑलरेडी बोल दिया, यहाँ से जो भी भारतीय उधर जाएगा 6 महीने के बाद पुलिस के उधर कोई कुछ लिखाना नहीं पड़ेगा। PIO, OCI के बारे में जो काम पिछले सरकार ने 50 साल में नहीं कर पाया, वो ये 3 महीने में कर दिया। ये कोई छोटा बात नहीं है। और ये 3-4 महीने में प्रधानमंत्री जनधन योजना, टॉयलेट के बारे में, लेडीज टॉयलेट के बारे में, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये लास्ट 3 मंथ्स में हर जगह पे पूरे विश्व में पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। एंड राइट नाउ पेट्रोल का कीमत कम रहा है। एंड वन थिंग अशोक जी, आई एम डिसएग्री विथ यू, मोदी मीन्स नॉट बिजनेस, मोदी मीन्स मिशन, मोदी मीन्स वर्क, एंड कांग्रेस मीन्स कमीशन, एंड कांग्रेस मीन्स करप्ट। Ashok ji, let me respond to that. You'll get a chance. Two things you touched upon, my friend. You will get a chance, my friend. Let me make a quick point. You have to respect the rules here, sir. Go ahead. I think right now we focus on something what Modi did not say and making a big issue out of it. I think that's a wrong point of discussion itself. Why don't we focus on something what he said positively on what he's trying to do? Okay, see, so he's in this foreign country, and if he tried to touch as many subjects as he can in 1.5 hours, and just because he didn't talk on this, he didn't talk on that, that makes no sense. Means how many topics he can cover? Okay, so let me talk on the favorite topic now. One second. So let me just connect all of you with something that he said. और उन्होंने कहा कि पहले वाली सरकार ने इतने सारे कानून बना दिए थे, जिसमें से कई कानून ऐसे हैं जो काम की गति को रोकते हैं। उन अड़चनों को हटाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ऐसे ऐसे कानून जो किसी तरह की रुकावट उत्पन्न करने वाले हैं उनको हटाकर कार्य की गति को बढ़ाने की तरफ काम कर रहा हूं। तो उनका मिशन कुछ इस तरह का है कि हर दिन एक ऐसा कानून जो किसी काम नहीं आ रहा है उसको हटाया जाए, उसको बदला जाए। सो कुल मिला के वो पॉलिसी पैरालिसिस की जो बात करते थे उसको हटाकर कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। ऐसी बातें आप भी पढ़ते होंगे जो पहले जिनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। एंड देन ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस। सो लेट्स जस्ट लुक एट e-governance point of view and just look at Narendra Modi connecting with masses of India as well as global citizens of India through Twitter or Facebook, or every day there are so many sources of information about what he did, whom he met are available. How do you see his relationship with technology? I think he is the most technology savvy prime minister we ever had. It was the most slick prime ministerial campaign which was done in the history of India. It was actually compared to the Obama's campaign in this country. And there was a war room in Gujarat, if you are aware of that, and people were working day and night, and they used to have holograms of Narendra Bhai Modi ji all over the country, and the number of rallies and then speeches he gave in these last 2 years is amazing. It's unparalleled in the history of India. So yeah, let me take quick comments. Right, let me take quick comments from our viewers. Hello, ITV Live. थोड़ा सा वॉल्यूम का कम। जी नमस्ते, आपका शुभ नाम? ऐसा है, ये जो साहब कांग्रेस के आते हैं नेता यहाँ, ये बिल्कुल बरखिलाफ बोलते हैं। इनको बोलिएगा, ये साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज, इनको कभी सफर नहीं किया, इसलिए सबसे बड़ी चीज ये की है कि वीजे की प्रॉब्लम थी लोगों को, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ये कभी वहां जाके धक्के नहीं खाए, इसलिए उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी वो ज्यादा एजेंसी करेंगे, PIO करेंगे, वीजा लेना नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी तो ये चीज है। और उनकी हर स्पीच में कुछ दम नजर आ रहा था कि वो करेंगे। अभी जुम्मा 2.5 दिन में ये कांग्रेस क्या चाहती है जो 10 साल में नहीं किया, 15 साल में। तो कुल मिला के आपको let me respond to these all, please. Give me 2 minutes. न्यूट्रल आदमी हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ। आप मेरे साथ बने रहें। लेट्स हियर राजेंद्र जी, he wants to respond to you. Quick brief, yeah. My friend talks about visa issues being outsourced.
it was the BJP government that had criticized the Congress initiative to outsource visa services. I remember Sushma Swaraj and the other BJP parliamentarians making a big hue and cry in the parliament. And now today they're talking about opening more outsourcing offices for visa purposes. If this is not hypocrisy, what it is, you say you do one thing while you're in opposition. Please let me complete. You are finishing. Nobody's interrupting. You are interrupting You yourself. say one thing when you're in opposition. You do one thing in opposition. Please, 1 second. Keep the comment short. No, Toilets. You talk about toilets. You talk about. Keep the comment short, Okay, please. try that you are doing yoga Sure. and speak quietly. You talk about building toilets. It's short. Everybody knows that after first 1 or 2 months after building the toilets in rural places, they are built like huge monuments. The minister comes, inaugurates them and all. So in 2 to 3 months, they are Okay, so I think we got unusable because there's a water problem in villages. Rajendraji, we got. So how are you still going to solve the problem of toilets? So we Where are you going to get the water to service them? I appreciate your call, sir. Talking about petrol. Rajendraji, let's take one more. I will tell you why the petrol prices had reduced. Try to appreciate silence sometimes a little bit. Thank you very much. 1 second. I'll take one more call. Hello, ITV Live. आप तक मेरी आवाज आ नहीं पा रही है शायद. Hello, ITV Live. Yes, I'm. Yes, Yeah. Go ahead. You are with us. What's your name, sir? my name is Bobardikar, मुबारक जी फरमाइए. and I'm. Yeah. Out of all the things, the most important thing that our beloved Prime Minister Modi has said, that what Swami Vivekananda said, know thyself. तो मोदी जी ने हम सबका मॉरल बूस्टिंग किया है. Forget about the details, what he is going to do and what not do and all that sort of thing. I think what you say. He has brought the morality in us and make us enthusiastic inside India and outside India, and that is going to be more dynamic society. And we will come up. You don't have to respond. I appreciate that. So I think that's a very valid point. And Dr. Bayan, Means for the first time in our lifetime, we are thinking the country is going in the right direction. First time we see there is a leader in India who we can trust to do the right thing for people. He is incorruptible because he has no family, he has no kids. Whether there is son-in-law is doing some money laundering and taking those lands in Punjab and making money out of it. There is nothing like that going on with this prime minister. So with these things, there is going to be first time there's a moral, ethical, responsible, and non-corrupt government is going to be there, and that is the hope people have. And I think, just a minute. And talking about the emotional side, you also made a video, kind of music video, I would say that. Actually, Both of you produced it. actually, that is not me. Actually, that credit actually goes to Dr. Raj Bhayani also. Actually, I initiate, and after that, there is वहाँ हर मोदी घर घर मोदी वो था. और राज भाई ने मेरे को बोला जो देखो ये तो क्या है बहुत पुराना हो गया तो कुछ नया करे. देन हमारा जो इसका जो डायरेक्टर जो था धीरेन पारिक भाई, उनको वो कॉल करके बोला तो मैंने बोला जो राज भाई आप जो ठीक समझें आप वो करें. एंड देन ये जो भारत बने भाग्य विधाता मोदी जी गाए जय जय गाथा, ये एक्चुअली इट्स ऑल क्रेडिट गो टू So credit, both of us. Okay, so both of them get the credit, and I think you are also getting the credit to. To very small thing about this song. Yes. This song was to be played just before Modi ji when he was supposed to come on the stage, but because he ran a little late and the song was not played on the stage, this song was a beautiful song and performance was to be done by Sonali Vyas, and because last minute cancellation did not happen, so we wanted to express that. Absolutely. So this is a sort of a premiere launch of this song, which was meant to be presented just before Modi ji's speech at Madison Square Garden. So you get the opportunity of watching it right here on ITV. So here is the song Ravi is going to play, Modi Gaye Jai Jai Gatha. There is a video of the song.
the third video. So we will come back to the song part a little later, and now is the time where I'll ask Rajendra ji to say what he wanted to say earlier. Well, my friends here talk about corruption within the Congress government. But I asked them, what about the corruption in Gujarat? Have you heard about a name, industrialist called Adani, where land was given at one rupee? Thousands of acres of land was given to him at 1 rupee. What, if that is not corruption, then what is? Okay, so Rajendra, And the same Adani was staying in the same hotel as the Prime Minister yesterday and day before yesterday. So you know, he has 18 tainted ministers in his cabinet. If he wants, if he was going to usher in a new and clean government, why does he have these tainted ministers in his cabinet? So basically, they have charges against so them. basically what happens is So sometimes you are stuck. You know, there's a lot of difference between what he talks and what he beyond does. that point. We have to move. We have been actually sharing this, which time is short. I want to respond. I want to respond about this, please. Sure. Yeah. Because my friend should know what is the corruption means. The corruption means if Bofo's gun. Yes, if I gave anybody opportunity to 1 rupees land because to getting investment. That is not corruption. Corruption means How much if Modi you benefit give- out of this? Yes, if you My give friend, anybody, you know- and if you get benefited from them, and this gentleman talking about toilet, and I am really upset about this. उन्होंने बोला, You can have toilets, but will you be able to maintain them? Will you be able to maintain them after 3 months? So what do you mean? The villager don't know. No, it's not a village. There are so many toilets that have been built in the past. They have not been maintained. That's the problem. And Rajendra, You should have eco-friendly toilets. respectable individuals. Be silent. Let's talk about. Let's talk about the bigger things, which Yeah, is Raji, let me put it very simple. Raji. In the 10 years, Villager, no, I did not say villager. I said, will you be able to maintain them and give the same? in 10 years of Manmohan Singh, what has happened is country has got. I don't want you to start that because it takes to another side. And let's talk about the op-ed again. I'll just quote one little bit from this op-ed in the Wall Street Journal, where Obama ji and Narendra Modi writes together. They say the promise of a better tomorrow is not solely for Indians and Americans. It also beckons us to move forward together for a better world. This is the central premise of our defining partnership for the 21st century. And the title is Forward We Go, चलें साथ साथ. So अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिलाकर हो रही है बात. और हमारे बहुत सारे दर्शक भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ. But now we have that song, so we'll just share a part of this song because we don't have probably the complete time. Are we ready, sir? Okay, here we go. बिगुल बजा है जीत का आ मिलजुल के गाएं शंखनाद नवयुग का है अपना जग महकाएं सुप्रभात की स्वर्णिम किरणें फैल रही नभ जल थल में महागर्जना की ध्वनियां गूंज रही है पल पल में चारों ओर अब शोर उठा है आशाओं का दीप जला है स्वर्णिम अवसर हमें मिला है भारत सबका भाग्य विधाता मोदी गाएं जय जय गाथा भारत सबका भाग्य विधाता मोदी गाएं जय जय गाथा मोदी जी गाएं जय जय गाथा महाशक्ति के रूप में अपना देश उभर कर आए अब विश्व पटल पर अपना ये जग नई पहचान बनाए अब दुनिया के हर कोने में ये संदेश ही जाए हम हैं अभेद हम एकजुट हमें कम ना आका जाए उद्घोषिए उदीयमान है नवचेतना गतिमान है और अब शोर उठा है आशाओं का दीप जला है स्वर्णिम अवसर हमें मिला है भारत सबका भाग्य विधाता मोदी गाएं जय जय गाथा भारत सबका भाग्य विधाता मोदी गाएं जय जय गाथा मोदी जी गाएं
ध्वजा हम हाथ में लेकर आगे बढ़ते जाएं, है वेग वेग चले उमड़ उमड़, रोके ना हम रुक पाए। उन्नति के इस पथ पर हम कंधे से कंधा मिलाए, चले साथ साथ हाथों में हाथ हम सबको गले लगाए। हुंकार है ये पुकार है, ये भाजपा तैयार है। और अब शोर उठा है, आशाओं का दीप जला है, स्वर्णिम अवसर हमें मिला है। भारत सबका भाग्य विधाता, मोदी गाएं जय जय गाथा। भारत सबका भाग्य विधाता, मोदी गाएं जय जय गाथा। मोदी जी गाएं जय जय गाथा। Just have say. एक भारत श्रेष्ठ भारत इस तरह की बात को पहुंचाता हुआ ये गीत प्रेम के साथ, देश के प्रति निष्ठा के साथ और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी में आस्था के साथ प्रोड्यूस किया डॉक्टर राज बयानी और दुरंत सिंह ने। इसके लिए हम उनका अभिवादन करते हुए आगे जब बढ़ रहे हैं तो मुझे याद आता है हम जब विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इकोनॉमी उसके साथ जुड़ जाती है। और अभी जो स्थिति है भारत और अमेरिका के बीच में कुछ $65 बिलियन का ही ट्रेड दोनों देशों के बीच में है और भारत का नंबर 5वें 6ठे या पीछे रहता है। तो दोनों देशों ने इस तरह की कल्पना की है कि आने वाले समय में ये जो ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच वो $500 बिलियन तक जा पहुंचे और उसके लिए जो कुछ आवश्यक रिलैक्सेशन कह दीजिए या स्मूथ वे में रेड टेप को हटाकर काम आगे बढ़ाने की स्थितियों को बनाने की बात है, उसका वादा कई सीईओज के साथ नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी करके गए और हमारे मित्र राजेंद्र जी कहेंगे और वो सचमुच क्या करते हैं निश्चित रूप से वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर मैं हमारे एक दर्शक के साथ जुड़ना चाहता हूं आपकी अनुमति से। हेलो ITV लाइव। नमस्ते। या हेलो नमस्ते जी फरमाएं। हाँ हेलो। हाँ यू आर विद अस। ओके आई वांट टू टॉक टू अशोक जी। जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाएं। हाँ तो मुझे टीवी पे बोलना है, उनको बोलना है कि भाई जो कांग्रेस भाई हमारे बैठे हुए हैं जी और वो बता रहे हैं कि भाई करप्शन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मुझे यही बताना है कि जब भी 50 साल कांग्रेस ने राज किया है देश पर और जो काम वो नहीं कर सके हैं, वो आप कैसे सोचते हैं कि मोदी जी 3 महीने में करके दिखाए? वो बात है। आपको थोड़ा तो मोदी जी अपना काम कर सकते हैं, राइट? ये बात सच्ची है ना कि जो 50 साल में ये लोग जो नहीं कर सके, करप्शन बढ़ता गया, सब जगह महंगाई बढ़ती गई, लोगों को खाना नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, ये सब अगर 50 साल में ये लोग नहीं कर सके तो वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि 100 दिन में ही मोदी ये सब करके दिखाए? लता जी हमने कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं की इलेक्शन के टाइम पे। आपको मैं जब बोलने के लिए निवेदन करूं तो आप बोले भारत बनाए, कृपा करके जब मैं आपसे निवेदन करूं तब बोले। जी लता जी, तो आपकी बात का सार ये हुआ कि आपको लगता है इन्हें पेशेंस रखना चाहिए कि वो मोदी सरकार जो कर रही है वो धीरे धीरे उसका आउटकम आएगा। इज दैट राइट? Yeah, is that right? Because okay, let's hear what he's now Lata ji, one by one. Yeah. Right? He's taking step one by one. जब भी पूरा ट्री ही सड़ गया है, जब 50 साल में हमारे इंडिया का पूरा झाड़ ही उन लोगों ने एक डालियां। लता जी आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। समय ऐसा कम है तो मैं आपकी बात को संक्षिप्त पर रखते हुए आपको 30 सेकंड में in 30 seconds say what you want to say in response to that. I want to say in 30 seconds. नहीं अरे आप कह चुकी हैं लता जी you know हम लोग झूठे वादे नहीं करे इलेक्शन के टाइम पे और हम लोग ये भी नहीं कहे कि हम लोग पावर में आने के बाद 100 दिन में हम काला पैसा वापस लाएंगे। अभी 100 दिन हो गया है। Okay, that is 30 seconds ago. All I have to say is now, what he is saying झूठे वादे नहीं कि 50 साल तो झूठे वादों से पूरा देश चला है। Every election there is a manifesto coming from Congress. They get elected and never fulfilled, and that has gone nowhere. That's why country has gone. See, we are worried not about China is rising. We are worried because India is diminishing. That is the concern. But the fact in Congress last 10 years, the economy has gone down from 10% GDP to 5% GDP. When was India having 10%? Let me finish, man. Okay. Have some respect for other people. Let me finish. You have got enough time to talk. Sure. Okay.
because it's come to the point where to stop. I know. So Yeah. finish. So this is means what he's saying, that we didn't give any false promises. There have been false promises after false promises by Congress government in last 50 years. People are fed up with this. Yeah, And people are fed up with this now, pretending here, sitting here, saying that we did not give false promises. I want you to hold your emotions and hold your excitement. Yeah. Let us just celebrate the moment that Indian Prime Minister has done something remarkable for the world to see. When did we have 10% Leave GDP that for now. This is another And false this is- statement. Okay, go ahead. Okay. Yeah, quick, very brief. Okay, definitely. But you know, gentleman from Congress, he should not interrupt. And from Congress party, they should know what is decency. That's okay. You don't have to teach us decency. No, so you are still breaking the promise. You don't need to learn. You talk, man. We never talk. Absolutely no. So just respect that same thing. Absolutely, but I don't want wrong figures here. जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, अभी भी फुटपाथ में लोग सो रहा है. इंदिरा गांधी ने जब बोला था, और जवाहरलाल नेहरू जी भी बोला था, बाद में राजीव गांधी का भी हम सुना था. राहुल जी ने बोला जो पहले हम आधा रोटी खाते थे और कांग्रेस को वोट देते थे, तो आधा रोटी से अभी पूरा रोटी में आते हुए 60 साल लग गया. तो भाई अनाज. So I think your 30 seconds is over, and I just want to take नारायण जैसा आदमी को जेल में डाल के बोलता है कि हम सच्चे आदमी है. So I want to take a last call for today's show. Hello ITV Live. नमस्ते. जल्दी से अपनी बात करें. जी नमस्ते. हाँ, so I think मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा. जी. It's not about the Congress and it's not about the BJP. Absolutely. Two things. एक तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि अभी सर जो बैठे हुए बोल रहे थे कि कैप्सूल ट्रेन के लिए इटली से बुला रहे हैं या जापान से बुला रहे हैं या चाइना से बुला रहे हैं. So what? The American company Gap, H&M, all the people they make clothes in India. So manufacturing can be anywhere done. It doesn't matter, right? The second thing, हमारे मनमोहन सिंह जी आए थे, उन्होंने खाना खाया, डिनर किया प्रेसिडेंट के साथ, वापस चले गए. मोदी जी आए, सबसे पहले वो यहाँ पर NRI से मिले. और I think this is the history. When one of the prime minister, he came and he see his own people. So I think यहाँ पर we should not make politics. Absolutely. What's your name, sir, again? And yeah, so Modi ji ने जो भी किया है, I personally like him, not because of he's from BJP or Congress, but he's a great guy. And I think I think that's a sentiment we hear from many people. And what's your name, sir? आपका शुभ नाम? I think hang up. I think I lost you. My name is Adil. I'm just watching you say. Yeah. Please go ahead. Your name again? I'm not a politician guy, but I think he's a great guy. I think I'll We all agree on this point. I think we have to be patient. We have to give him some time to produce results. The guy has a vision, and he will be true leader because he will convert this vision into reality. But we have to have some patience and some decency to understand him and to have trust in him and give him some chance. Allow me to interrupt you now, and there is no more time left. So I just want to remind all of us that Modi ji at various places referred to Vasudhaiva Kutumbakam, that is the whole world is a family. And he is very much rooted into what Indian spirit is all about, and I guess that also helps him in connecting with people wherever he go. So today we don't have enough time, but next Monday and Tuesday we'll have more about the development after his visit to America and how some media has responded and what happened. We didn't touch about Modi ji's relationship with media, and there is a new leaf that he has taken out in terms of relationship of Prime Minister with Indian media. Good and bad, both sides are there. We'll talk about that next week. But I want to thank Rajendra Dijpalli ji, Duranta Singh ji, and Dr. Raj Biyani ji for being with us. And most important, thanking all of you for making this program such a vibrant show today. And this is the time to say goodbye with thanks from today's Inside Tonight with Ashok Vyas. Namaste.